हेलो चैम, वेलकम टू डॉक्टर सौरव क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे तरफ से कोई फ्री और पेड क्लास की ज़रूरत है, डाउट क्लियरिंग सेशन की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, कुछ भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सअप कर लीजिए इस वाले नंबर पर। अभी हमारे यहाँ पर ISS और IAS कोर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन डॉक्टर सौरव क्लासेस एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन विद डॉक्टर सौरव सर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है? द क्लासिकल रंच कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड इज अप्लाइड टू dy by dx minus y here y not equals to y of 0 equals to 1, and the result obtained after applying one step of the length h is 1 minus h plus h square by 2. These are all the option. So how can I solve it? So given the differential equation is क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा dy by dx equals to f of xy equals to minus y. Okay, so the Ranchkutta fourth order method update solution as follows. RK4 method solution updates as follows: y of n plus 1 equals to yn plus h by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4, where k1 equals to f of xn yn equals to minus of yn. Okay, so here k2 equals to function of xn plus h by 2 comma yn plus h by 2 k1, that is equals to minus yn plus h by 2 k1, that is also equals to minus of yn minus h by 2 yn. So that means the result is minus yn, taking common minus yn. What is the result? 1 minus h by 2. So here the k2 is that, and the k3 is f of xn plus h by 2 comma yn plus h by 2 k2. Okay, and the result is minus of yn plus h by 2 k2, that is equals to minus of yn plus h by 2 over minus yn taking minus yn common, 1 minus h by 2. Okay, so here the result is minus yn common 1 minus h by 2 plus h square by 4. Okay, so what will be the result? k4. That means f of xn plus h plus yn plus
hk3. So the result is minus yn plus hk3. So the result is minus of minus yn minus hyn common 1 minus h by 2 plus h square by 4. Okay, that means the result is minus yn minus h plus h square by 4, h square by 2 minus h cube by 4. Okay, so given that y not equals to 1, so given that y not equals to 1, so the next value y1, next value y1 after one step of length h is, after one step of h length is y1 1 plus h by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Okay, so substitute the value k1 k2 k3 k4 calculated above, k1 k2 k3 k4, the calculated above so the value is k1 equals to minus 1 and k2 equals to minus of 1 minus h by 2, and the value of k3 equals to 1 minus h by 2 plus h square by 4. Okay, so the value of k4 minus 1 minus 1 means minus of 1 minus h plus h square by 2 minus h cube by 4. So simplifying y1, simplifying y1 equals to, what are the value y1 equals to 1 plus h by 6, that means minus 1 plus 2 into minus 1 plus h by 2 plus 2 into minus 1 plus h by 2 minus h square by 4 mass plus minus 1 plus h minus h square by 2 plus h cube by 4. Okay, so y1 1 plus h by 6 minus 1 minus 2 plus h minus 2 plus h minus h square by 2 minus 1 plus h minus h square by 2 plus h square by 4. Okay, so
After solving this, the value is 1 plus h by 6 minus 1 minus 2 minus 6. That means the result is minus 6 plus 3h minus h square by 2, h square by 2, h square by 4. The result is h square by h square by 2 will be cancelled out, and the result is h square, and this is h cube by 4. So the result is plus h cube by 4. Okay, so what will be the result here? 1 plus 1 minus h plus h square by 2 minus h cube by 6 plus h to the power 4 by 24. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कैसे सॉल्व हुआ ये? सो यहाँ पर इस तरह का जब आपको सॉल्व ऐसे हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये मैच कर रहा है इस वाले ऑप्शन नंबर डी से। सो ऑप्शन सी से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 6। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही बहुत सारा ट्रिक्स को जानने के लिए आप जुड़े रहे सोरस क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।